हेलो फ्रेंड्स मु आपको स्वागत जनाची लेट्स गेन एजुकेशन को चलंतु आज आम डिस्कस करबा बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यूनिट 1 आज आम पढिबा देखिबा चलंतु यूनिट 1 ने कोन अछि देखंतु सोशल साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी कंटेंट देखंतु आर भितर आम आज कोन पढिबा नेचुरल साइंस पढिबा मीनिंग ऑफ साइंस पढिबा नेचर ऑफ साइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस स्कोप ऑफ साइंस इंपोर्टेंस ऑफ साइंस social science is distinction between natural and social science, social studies meaning, definition of social studies, historical background of social studies, nature of social studies, scope of social studies, distinction between social sciences and social studies, differences, similarities between social sciences and social studies, understanding society through various social sciences. देखो आज आम ये पढ़ा सो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यूनिट 1 रे चलो तो फास्ट देखिबा हमें नेचुरल साइंस देखिबा देखो नेचुरल साइंसेस कोन देखो प्राकृतिक विज्ञान देखो कौन देछि द नेचुरल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ द डिस्क्रिप्शन प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल एंड एम्पिरिकल एविडेंस वैलिडिटी एक्यूरेसी एंड सोशल mechanism ensuring quality control such as peer review and repeatability of finding are amongst the criteria and methods used for this purpose देखो एथरे कोन कहिछि ना जो हमर प्राकृतिक विज्ञान रहिछि जो प्राकृतिक विज्ञान अछि से कोन सी पर्यवेक्षण और परीक्षामूलक प्रमाण उपर सी डिपेंड करुच्ची तो से परीक्षामूलक प्रमाण उपर से रखिकी जमीक डिस्क्रिप्शन प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फेनोमेना उपर से कौन करे सेटा कंसर्न करे वैलिडिटी एक्यूरेसी एंड सोशल मेकानिज्म एंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल सच एज पीयर रिव्यू एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स आर अमंगस्ट द क्राइटेरिया एंड मेथड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस नेक्स्ट देखो मीनिंग ऑफ साइंस विज्ञान मीनिंग देखो कौन देछि द साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड scientia of sera, which means knowledge or to know. Science provides knowledge about the surroundings. Science is a body of systematic knowledge. देखो ये कौन कही ना जो साइंस अच्छी से कौन कर जो लैटिन वर्ड अच्छी साइंटिया एंड ऑफ सेरा सेरा साइंटिया तो व्हिच मीन जार माने होची जे नॉलेज ज्ञान ज्ञान आ कौन ना टू नो जानिबा तो साइंस प्रोवाइड्स नॉलेज साइंस कौन करे प्रोवाइड करे नॉलेज प्रोवाइड करे अबाउट द सराउंडिंग से जो सराउंडिंग रे जहाँ भी नॉलेज अच्छी साइंस ताकू ज्ञान प्रोवाइड करी थाए साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज साइंस इज द इन्वेस्टिगेशन एंड interpretation of events in the natural physical environment and within our bodies देखो ये केते कहा जाय some important definitions given by different scientists in relation to science are as follows देखो एते मो मतरे देखो बेंजामिन कहते जोड़ा इंपोर्टेंट मुझे कही दूसरी खाली मन रखी दिंतु बेंजामिन का मतरे कहना साइंस इज दैट इंक्वायरी which attempts to arrive at knowledge of the world by method of observation and by the method of confirmed hypothesis on what is given in observation से परि आइंस्टाइन का मतरे कोन science is an attempt to make the chaotic diversity of our sense experience correspond to logically uniform systems of thought दे मानन को ऊपर कहछन विंगर सेमति कहछन विंगर ए फिजिसिस्ट द रिगार्ड साइंस एज ए स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना नेक्स्ट देखो ए पिक्चर को देखो फ्रॉम द वेरियस डेफिनेशंस थ्री फोल्ड नेचर ऑफ साइंस इज एक्सप्लेन्ड सिंपली एज देखो ये जो रही वेरियस जो डेफिनेशंस रही साइंस रो तो देखो तार कोन देछि ना थ्री फोल्ड नेचर ऑफ साइंस इज एक्सप्लेन्ड जो तीनोटी रही तो से देखो साइंस रही साइंस कोन साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन साइंस कोन ना बॉडी रो नॉलेज जानिबा आउ साइंस माने कोन ना सी गोटे मेथड हेउची जोटा कि हमें इंक्वायरी करि थांती बा इन्वेस्टिगेशन करि थांती आउ साइंस कोन साइंस इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ए वे ऑफ थिंकिंग मन प्रति थाए एटीट्यूड गोटे जोटा कि माने लाइफ ऊपर थिंकिबार गोटे ये थाए नेक्स्ट देखो साइंस एज व्यूड बाय डिफरेंट पीपल देखो साइंस एज व्यूड बाय डिफरेंट पीपल देखो लेमैन को मतरे देखो साइंस इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट साइंस इज ए मेथड बाय व्हिच हाइपोथेसिस आर टेस्टेड फिलोसोफर को मतरे कोन साइंस इज ए वे ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ नॉलेज thus science could be defined as a body of knowledge a way of investigation or method and a way of thinking in the pursuit of an undertaking of nature ये थिला द नेक्स्ट देखंतु नेचर ऑफ साइंस देखंतु साइंस रो नेचर देखंतु एतोडे पॉइंट देखंतु फर्स्ट पॉइंट देखंतु साइंस इज ए सिस्टम इट इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज वेयर सो मेनी फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर नेक्स्ट पॉइंट कोन साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस थर्ड पॉइंट होची साइंस इज ए सिस्टमैटिक लर्निंग फोर्थ पॉइंट इज साइंस adopts the scientific method which is known as reliable valid objective unbiased and verifiable fifth point hochi science is a body of cumulative knowledge on observations experimentation and inferences next point dekhantu sixth point science explains the natural phenomena on the basis of established laws of nature next point dekhantu seventh point science helps in building the self confidence and systematic approach to the problem so ye thila kono nature of science ro point thila dekhantu
ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେପରିକି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇନାମିକ୍, ଏସବୁ ତାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତାର ରହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକୁମୁଲେଟେଡ୍ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ ହୋୟାର ମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ନଲେଜ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ empirical in nature and the knowledge is obtained through observation and experimentation. The knowledge gained can be proved experimentally. Next point देखो it is a method of inquiry. Next point देखो it is based on critical discrimination. It is objective and impartial and unbiased. तब कौन देखिए ना साइंस फॉर्मुलेटेड लॉज देखिए। तब देखिए चलंतु स्कोप ऑफ साइंस। स्कोप ऑफ साइंस कौन देखो स्कोप ऑफ साइंस होची ना द स्कोप ऑफ साइंस इज इनफाइनाइट, इट सीक्स टू आंसर ऑल दैट इज आंसर्ड. The scope of the field of science is unlimited, its material is endless. Every group of natural phenomena, every phase of social life, every stage of past or present development is material for science. तार पॉइंट गुड़ा केतेटा देछि देखंतु फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकानिज्म प्रपोज, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल यूज्ड इन डिफरेंट रिएक्शंस, एस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स. तो ये परी से देछि केते गुड़े. नेक्स्ट देखंतु इंपोर्टेंस ऑफ साइंस. साइंस रो इंपोर्टेंस कोन देखंतु साइंस रो इंपोर्टेंस होछि एक्चुअली द मॉडर्न वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय साइंस एंड मेंटेन्ड बाय साइंस. सम इंपोर्टेंस ऑफ साइंस एज गिवन बिलो देखंतु देछि. फर्स्ट देखंतु पॉइंट देखंतु द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस इज न्यू क्रिएशन, इन्वेंशन, डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजीज. सेकंड पॉइंट वाज साइंस quantitized, described, explains, protects and produce empirical knowledge. It also create a great culture. Third point होछि कोन ना science has its impact on different fields, agriculture, health, home, product, leisure time, activities, industries and welfare. Next point देखंतु social sciences देखंतु. According to Charles Peirce, social sciences are a body of knowledge and thought pertaining to human affairs as distinguished from sticks, stones, stars, and physical objects. James I defines the social sciences as those bodies of learning and study which recognize the simultaneous and mutual action of physical and non-physical stimuli which produce social reaction. तार कैरेक्टरिस्टिक गुड़ा देखंतु देछि डायरेक्ट bearing on man's activity. Social sciences are those part of cultural knowledge which have direct bearing on man's activity in specific field. Second point देछि कोन ना advanced studies of human society. Social sciences are the advanced studies of human society taught to mature students. Third point देखंतु truth providing objectives. Social sciences seek to find out new truth about human relationship to contribute to social utility and advancement of knowledge. तो नेक्स्ट पॉइंट देखंतु कोन ना डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंस देखंतु देखंतु ए पिक्चर को देखंतु देखंतु नेचुरल साइंस रो देखंतु तार कोन रहिछि गोल ये सब कोन रहिछि देखंतु नेचुरल साइंस रो देखंतु रहिछि कोन एस्ट्रोनॉमी रहिछि, केमिस्ट्री रहिछि, जियोलॉजी रहिछि, फिजिक्स रहिछि, बायोलॉजी रहिछि. नेचुरल साइंस रे सोशल साइंस कोन सोशल साइंस रे हमर ह्यूमैनिटीज, कल्चरल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी रहिछि हमर सोशल साइंस रे. तापर देखंतु ए जो पिक्चरटा देखंतु सोशल एंड नेचुरल साइंसेस आर टू ब्रांचेस ऑफ साइंस. साइंस रो दुईटी ब्रांच किए ना सोशल एंड नेचुरल साइंस which differ strongly but also show some important similarity. तंगर केते ओडे पार्ट जोटा कि सिमिलरिटी रहउची देखंतु नेचुरल साइंस रो गोल देखंतु नेचुरल साइंस रो गोल होची अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेना इन द फिजिकल वर्ल्ड. सेही परि सोशल साइंस रो गोल कोन रहउची ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन सोसाइटी. नेचुरल साइंस रो सेमती प्रेडिक्शन देखंतु प्रेडिक्शन ऑफ्टन पॉसिबल. सोशल साइंस रो प्रेडिक्शन होची लॉ प्रेडिक्टिव पावर. सेही परि देखंतु नेचुरल साइंस रो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी कोन रहउची ना फिजिकल वर्ल्ड रहउची. सेही परि सोशल साइंस रो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी रहउची सोशल इंटरेक्शन. नेक्स्ट देखंतु तांगर नेचुरल साइंस रो जो मेथोडोलॉजी रहिछि तांकर रहिछि कोन ना साइंटिफिक रहिछि, इंडक्टिव जनरेशन ऑफ थ्योरीज रहिछि, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन रहिछि थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट कोन रहिछि ना मेनली क्वांटिटेटिव अप्रोच. सेही परि सोशल साइंस रो जो मेथोडोलॉजी अछि से देखंतु से अछि कोन ना इंडक्टिव जनरेशन ऑफ थ्योरीज, एम्पिरिकल वेरिफिकेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन इन इंटरव्यूज एंड सर्वेज. नेक्स्ट पॉइंट देखंतु तांकर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच. नेक्स्ट देखंतु नेचुरल साइंस रो लिमिटेशन देखंतु रछि एपिस्टेमिक क्वेश्चनेबिलिटी. से परि सोशल साइंस रो लिमिटेशन होछि इंडक्टिव एंड सिंथेटिक अप्रोच डज नॉट अलाउ वेरिफिकेशन बाय एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट पॉइंट कोन रछि सोशल साइंस रो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फेनोमेना अलाउस ओनली लिमिटेड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल. से परि लिमिटेशन रछि नेचुरल साइंस रो लास्ट पॉइंट नो क्वेश्चंस ऑफ जजमेंट, मोरल वैल्यू एटसेट्रा.
नेक्स्ट देखो आम जो सोशल स्टडीज तार मीनिंग देखो सोशल स्टडीर मीनिंग देखो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मतरे कौन ना मैन इज ए सोशल एनिमल मैन जने कौन ना सोशल एनिमल मैन कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम द सोसाइटी मैन कौन करे ना गोटे मैन से लिव कर पारे ना क्या ना सोसाइटी बिना से बची पारे ना द सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सो मैन ए सोसाइटी डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल मतलब नेक्स्ट देखो डेफिनेशंस ऑफ सोशल स्टडीज देखो डेफिनेशंस ऑफ सोशल स्टडीज देखो Definitions of social studies. The term social studies has been defined differently by different commissions, committees, and writers. First one देखो देखिए कौन ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखो नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज देखो तादर कौन देखिए ना सोशल स्टडीज इज द इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ द सोशल साइंस एंड ह्यूमनिस्टिक टू प्रमोट सिविक कॉम्पिटेंस तार नेक्स्ट पॉइंट होची कौन ना अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन इन इंडिया 1952 to 53 जो देछि कि सोशल स्टडीज एज ए टर्म इज कंपैरेटिवली न्यू इन इंडिया एजुकेशन इट इज मीन टू कवर द ग्राउंड ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक सिविक्स एसेट्रा थर्ड पॉइंट देखो कौन देखिए ना जॉन बी माइकल्स देछंती कौन ना द सोशल स्टडीज आर कंसर्न्ड विथ मैन एंड हिज सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट दे डील विथ ह्यूमन रिलेशनशिप नेक्स्ट पॉइंट देखो बैरेटल देछंती कौन तांका मतरे द सोशल स्टडीज इज एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड knowledge concerning human relations for the purpose of citizenship education. Wesley देछंती कौन ना the social studies are the social science simplified for pedagogical purpose. 6 पॉइंट रे देखंतु इंगल एंड ओचो आ देछंती कौन the social studies are concerned exclusives with the education of citizens in a democracy. Citizenship education consists of two related but somewhat separated parts. The first socialization, the second counter socialization. देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडीज देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडी कौन देखो सोशल स्टडीज डील्स विथ सोशल activities of people living in society. The term social studies is used to designate and subject which deals with human relationship. Historically, social studies organized in USA in 1892 when in a conference a combined study of history, economics and political science was given the name of social studies. In 1911, a committee of 10 further enlarged its scope by incorporating sociology into it. In 1916, social studies gained official recognition and its importance was highlighted for the first time by National Education Commission. In 1921, a national council was constituted to deep studies relating to unification and coordination of different subjects. Next one देखो कौन रही nature of social studies देखो nature of social study कौन देखो social studies is the study of society social lay foundation for the children about the nature of democracy even though schools play indirect role in the social change. Social studies subjects should cultivate social, moral, ethical, and spiritual values. The subject deals with man and his multilateral relationship, man to his neighbor, man to society, etc. Next one चलो तो देखिए हमें नेक्स्ट पॉइंट देखो स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज स्कोप ऑफ सोशल स्टडी कहले कौन बुझे हमें ना द टर्म स्कोप रिफर्स टू द रेंज एक्सटेंड आउटलुक एप्लीकेशंस ब्रेथ and comprehensiveness. Social studies is an integrated study of social sciences and humanities. The scope of social studies is to acquaint the children with various social activities. The scope of social studies is very vast as it deals with different areas. देखो social studies study the relationship that is देखो तार relationship देखो कौन रही relationship between man and man, relationship between man and institutions, relationship between man and earth, and relationships between man and goods. So these above contents are to be included with programs of teaching social studies. तापर देखो कौन पॉइंट अच्छी ना distinction between social sciences and social studies देखो तार कौन रही ना social studies and social sciences रे social science is a generic term covering the scientific study of man singly or in groups as regards is essentially non-physical characteristics. Social sciences deal with human behavior in its social and cultural aspects. The social science generally include disciplines like economic, political science, sociology, social physiology, anthropology, social and economic geography. Social studies integrated
the experience and knowledge concerning human relationships. Let us discuss how the term social studies. One of the earliest user of the term social studies appeared in the United States in 1905 in an article in the Southern Workman written by Thomas Jesus Jones in 1908. Jones expanded this article and published social studies in the Hampton curriculum. The social studies is not a combination of social science. Social science is not a combination of social sciences like history, geography, civic, economic, etc. Though social studies draw its material from history, geography, civic, economic, etc., but it is not a part of history, geography, civics, and economics, but together unrelatedly. देखो डिस्टिंक्शन ऑफ सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंसेस तार पॉइंट गुड़ा देखो केते पॉइंट अछि तार जेपरि फर्स्ट पॉइंट होची डिस्टिंक्शन इन नेचर सेकंड पॉइंट इज डिस्टिंक्शन इन व्यू पॉइंट थर्ड पॉइंट होची डिस्टिंक्शन इन एम फोर्थ पॉइंट होची डिस्टिंक्शन इन इंटीग्रेशन फिफ्थ पॉइंट होची डिस्टिंक्शन इन रीडर्स डिस्टिंक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी डिस्टिंक्शन इन स्कोप नेक्स्ट पॉइंट होची डिस्टिंक्शन इन यूटिलिटी देखो आम जो डिस्टिंक्शन इन नेचर देखिए देखो से देखो टे कहुई सोशल साइंसेस प्रोवाइड डिटेल्स नॉलेज अबाउट देयर रिप्रेजेंटेटिव फील्ड्स रिटन फॉर एडल्ट्स व्हाइल सोशल स्टडीज इज प्राइमरली डिजाइन फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पजेस इन स्कूल्स नेक्स्ट पॉइंट देखो डिस्टिंक्शन इन व्यू पॉइंट कहुई सोशल साइंसेस डील्स विथ थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स व्हाइल सोशल स्टडीज डील विथ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स व्हाइल सोशल साइंसेस प्रोवाइड द थ्योरी इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स देखो थर्ड पॉइंट देखो डिस्टिंक्शन इन एम देखो द एम ऑफ सोशल साइंसेस is theoretical study while that of social study is practically utility. The aim of social sciences is to provide knowledge whereas that of social studies is to develop individuals into good citizens. Fourth point देखो distinction in integration देखो social sciences provide knowledge in isolated from whereas social studies provides integrated knowledge. Social sciences study social after analyzing it into various aspects giving knowledge in an isolated from as the study of society as a unity. देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन देखिए ना डिस्टिंक्शन इन रीडर रे रही कोन ना सोशल साइंसेस मे बी स्टडीड बाय ए चूजन फ्यू व्हाइल सोशल स्टडीज इज ए मस्ट फॉर एवरीबॉडी व्हाइल सोशल साइंसेस डील विथ एडवांस्ड नॉलेज रिक्वायर्ड for those only who pursue university education. Social studies enables the people to become good citizens. Next one देखो the distinction in complexity देखो social sciences add a complexity whereas social studies is comparatively simply and easy. As advanced and detailed studies, social sciences are complex and difficult meant to be studies up to the higher secondary classes. Social studies is practical and useful for everybody. It is simple and easy. Next one देखो next one देखिए distinction in scope देखिए कौन ना the scope of social sciences is limited to their own field whereas the scope of social study is almost unlimited as each social science studies its own fields. Its scope is limited. सेपरी distinction in utility देखिए कौन ना social sciences seek social utility, social studies seeks instructional utility. In the words of Motor, it is accurate to think of social studies as an applied field which attempts to fuse scientific knowledge with ethical, philosophical, religious, and social consideration, which areas in the process of decision making as practiced by the citizen. Next, देखो next देखो social science देखो they are the advanced studies of human society. Second point रही they represents an adult approach रही. Third point रही they are the theory part of human affairs. Fourth point कौन ना they lay more emphasis on knowledge रही. और next point कौन रही they aim at finding out how new truth about human relationship रही. Next point देखो कौन ना social studies देखो social studies रे कौन रही देखो social studies रही they are the simplified portions of social science. They represent a child centered approach. They are the practical part of human affairs. Next point, they lay emphasis on the functional part of knowledge. Next point, they aim at guiding adolescents in their learning. Selected portions, what has been discovered in social science. In International Encyclopedia of the Social Science, edited by David Skills, includes the following disciplines under social sciences. तार point गुड़ी देखो first point कौन ना anthropology, second point होची behavioral science, third point economic, fourth point geography, fifth point history, sixth point law, seventh point political science, 8 point होची pediatry, 9 point physiology, 10 point sociology, 11 point कौन करो ना स्टैटिस्टिक्स देखो तापर कौन देखिए ना
देखो द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका गिव्स द स्कोप ऑफ सोशल साइंस as the social sciences which deals with human behavior in its social and cultural aspects include the following disciplines। देखो फर्स्ट पॉइंट कौन देछि ना इकोनॉमिक देछि, सेकंड पॉइंट पॉलिटिकल साइंस, थर्ड पॉइंट सोशियोलॉजी, फोर्थ पॉइंट सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिफ्थ पॉइंट सोशल फिजियोलॉजी, सिक्स पॉइंट कौन ना सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी देछि। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो डिफरेंस सिमिलारिटीज बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। देखो आम सोशल साइंस और सोशल स्टडीज भितर डिफरेंस देखिए चलतु। देखो सोशल साइंस देखो फर्स्ट रही पॉइंट कौन ना सोशल साइंसेस आर द एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी व्हिच आर टॉट एट द हाई स्कूल स्टेज, हायर सेकेंडरी स्टेज एंड एट कॉलेज स्टेज। सेपरी सोशल स्टडी कौन देछि ना सोशल स्टडीज आर सिंप्लिफाइड पोर्शंस ऑफ सोशल साइंसेस सिलेक्टेड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस एट द प्राइमरी एंड मिडिल स्टेज। देखो आर सोशल साइंस सेकंड पॉइंट देखो सोशल साइंसेस रिप्रेजेंट एन एडल्ट अप्रोच रे रही सोशल स्टडी कौन रही सेकंड पॉइंट तंकर सोशल स्टडीज रिप्रेजेंट ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रही। सेपरी देखो सोशल साइंस थर्ड पॉइंट रे कौन अछि ना सोशल साइंसेस आर द थ्योरी पार्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। सोशल स्टडीज देखो थर्ड पॉइंट रे अछि सोशल स्टडीज आर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। देखो आर फोर्थ पॉइंट देखो कौन सोशल साइंस जो फोर्थ पॉइंट अच्छी सोशल साइंसेस ले मोर एम्फासिस ऑन नॉलेज। सोशल स्टडी फोर्थ पॉइंट देखो सोशल स्टडी ले मोर एम्फासिस ऑन द फंक्शनल पार्ट ऑफ नॉलेज। देखो सोशल साइंस रे इन सोशल साइंस सोशल यूटिलिटी इन द प्राइमरी ऑब्जेक्ट थिला बेले सोशल स्टडी रे कोन अछि ना इन सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट। सेपरी सोशल साइंसेस रे सोशल साइंसेस एम एट फाइंडिंग आउट हाउ न्यू ट्रूथ अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप थिला बेले सोशल स्टडीज रे कोन होछि ना सोशल स्टडीज एम एट गाइडिंग एडोलेसेंट्स इन देयर लर्निंग ऑफ सिलेक्टेड पोर्शंस ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्कवर्ड इन सोशल साइंसेस रही। तो तारो देखो कोन तर ये देखो सिमिलारिटीज बिटवीन सोशल साइंसेस एंड सोशल स्टडीज। देखो तार कौन रही सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज हैव मेनी सिमिलारिटीज। देखो कौन रही ना सोशल साइंस फर्स्ट पॉइंट देखो सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज आर नॉट ओनली रिलेटेड जेनेरिकली दे आल्सो शेयर ए कॉमन बॉडी ऑफ कंटेंट। द सोशल साइंसेस आर द बेस एंड फाउंडेशन to social studies। second point कौन रही ना human relations to the is the common subject matter for both social sciences and social studies। both of them deal with the man's relationship of man and to his environment and how he meets his basic needs। third point कौन रही ना social sciences and social studies both of them are accurate and reliable रही। next point देखो देखो ह्यूमन रिलेशनशिप आर द कॉमन डोमिनेटर ऑफ द सोशल साइंस एंड द सोशल स्टडी। देखो सोशल स्टडी रे मैन रो बेसिक नीड कौन रही देखो मैंस बेसिक एक्टिविटीज कौन रही देखो एक्टिविटी गुड़ा कौन रही ना प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एंड आइस्थेटिक्स एंड रिलीजियंस। ये जोड़ा तार मैन बेसिक एक्टिविटी गुड़ा रही नहीं गोटे कौन ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी रही जोटा कि फैक्ट रोचे, कॉन्सेप्ट रोचे तीन भाग में विभक्त जोटा कि फैक्ट रोचे, कॉन्सेप्ट रोचे, जेनेरालाइजेशन रोचे। तो ये जो तीन टाक नहीं गोटे ना कौन ना द सोशल स्टडीज जार ना रही कौन ना द सोशल स्टडीज रही। नेक्स्ट पॉइंट आम आसतु देखा देखो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू वेरियस सोशल साइंस। देखो यार कौन देखो द वेरियस डिसिप्लिन्स इन द सोशल साइंसेस ऑल्सो सीम टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दे एम एट स्टडी ऑफ मैन एंड सोसाइटी इन ऑर्डर टू लिव इन द सोसाइटी सक्सेसफुली मैन नीड्स द नॉलेज फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस। देखो फर्स्ट पॉइंट कौन रही फर्स्ट पॉइंट रही सोशल स्टडीज एंड हिस्ट्री। इतने कौन रही ना हिस्ट्री इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। द सोशल स्टडीज प्रोग्राम contains material from history। It speaks about the past, for example kings, their works, their extension of empire and also their victories and failures। most of the past we can know through the historical monuments and pillar of victory on which we find the inspiration describing their glories। second point कौन रही ना social studies and geography। देखो geography explains the climatic condition of different regions, the boundaries of countries, conditions for cultivation of different crop and the conditions for the establishment of industries। next point कौन रोची ना social studies and civics रोची। देखो इधर कौन ची ना civic is a part of social studies। it cannot be taught in isolation। civics as a subject explained about the government, state, its principles and its problems। it explains about the need of the government, the facilities it creates for the people, the rights, duties and responsibilities of citizens, the role of a citizen in a society and the duties of a good citizen। देखो तो 4 पॉइंट रे कौन अछि ना सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक रे अछि। देखो कौन ना इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल साइंसेस mentioned by the Greeks economic teachers about demand, supply, utility and distributions। as a part of social studies is considerance of the attitude of man। it explains about the self-sufficiency। देखो man's life will remain incomplete without the knowledge from all these
सोशल साइंसेस देखो ये कौन देखना पिक्चर देखो सोशल साइंस ये कौन सोशल स्टडीज देखिए तार देखो कौन रोची रोची फास्ट रोची सोशियोलॉजी सिविक्स रोची कल्चर रोची इकोनॉमिक रोची ज्योग्राफी रोची हिस्ट्री फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस रोची एगुड़ा कौन ना कंपोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस एगुड़ा हूँ कंपोनेंट्स गुड़िक रोची जो कि सिविक्स सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस कल्चर इकोनॉमिक ज्योग्राफी हिस्ट्री फिलोसफी रोची तो ये आपंकर B.ed फास्ट सेमिस्टर मानकर जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यूनिट 1 पेपर आई होप आपको भल लगे लाइक शेयर कमेंट करिया भी जमार भी बोलते नहीं आम चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहाँ फल आपने नुआ नुआ वीडियो पाई परिबे थैंक यू।